Hello everyone, this is the second part. This is the third part basically in which we were solving the previous year question paper of Delhi Judicial Services that was held in 2011. And we will start from question number 101 and up till question number 100 we have already solved and we will continue from here. बेसिकली मुझे भी सॉल्व करना है और मैं भी प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ तो सोचा कि क्यों ना आपको भी साथ में जोड़ लिया जाए। आप इससे सीख भी सकते हो, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, अगर नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। टोटली अप टू यू। सी क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट क्वेश्चन नंबर 1 सेज द preamble of the Constitution of India. The preamble of the Constitution of India. The word socialist was incorporated in the preamble by 42nd Amendment with effect from 3rd January 2000, 3rd January 1977. So the word socialist was incorporated in the preamble by the 42nd Amendment with effect from 3rd January 1977. Apart from that, इनमें से ये तीनों गलत है। ठीक है, this one is the right option of question number 101. See question number 102. The basic structure doctrine with respect to the Constitution of India was propounded first in the judgment of the Supreme Court in case Vanan Bharti versus State of Kerala. The basic structure doctrine with respect to the Constitution of India was propounded propounded first in the judgment of the case Vanan Bharti versus State of Kerala. So the right option is option number first. See question number 103. Equality of opportunity in matter of public employment is guaranteed to all citizens of India. Equality of opportunity in matter of public employment is guaranteed to all citizens of India. Right answer is option number first. See question number 104. The prohibition against prosecution and punishment for the same offense more than once is contained in the Constitution of India. Prohibition against prosecution and punishment for the same offense more than once. एक से ज़्यादा बार किसी सेम ऑफेंस के लिए सेम व्यक्ति को अपराधी मतलब पनिशमेंट नहीं दे सकते। वो कॉन्सेप्ट कहाँ पे मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 105. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज वेस्टेड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज वेस्टेड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इन यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर ना इन यूनियन गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर सेकंड होना चाहिए ना। उप्स 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 उप्स। क्वेश्चन नंबर 105. एग्जीक्यूटिंग पावर executing power of union government. Constitution has vested the executing power of the union government. I think मुझे लगता है कि इसका जो राइट आंसर है वो प्राइम मिनिस्टर ही होगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिंग पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट का तो उसी के पास है ना। देखो इसका राइट आंसर तो मुझे ये प्रेसिडेंट शो हो रहा है, बट मैं जाना चाहूँगा इसके साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ। आई डोंट नो, मैं गलत भी हो सकता हूँ। इनकेस अगर हूँ तो करेक्ट कर देना प्लीज। क्वेश्चन नंबर 103. क्वेश्चन नंबर 106. विच राइट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट? ये तो फंडामेंटल है, फंडामेंटल है, फंडामेंटल है दिस वन। ये फंडामेंटल राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी क्वेश्चन नंबर 106 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। सी क्वेश्चन नंबर 107. क्वेश्चन नंबर 107. Match list 1 with the list 2 and select the correct answer using the codes given below the list. List number 1 habeas corpus, mandamus, quo warranto, certiorari. ओके, habeas corpus और उसके बाद लिस्ट 2 में है वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस, अनलॉफुल अरेस्ट एंड डिटेंशन, एक्सरसाइज ऑफ पावर विदाउट जुरिडिक्शन एंड नॉन परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी। इसको मैच करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट को मैच कर देते हैं बी के साथ। ठीक है, हेबियस कॉर्पस मीन्स अनलॉफुल अरेस्ट एंड डिटेंशन अगर हुआ हो तो वैसे में टू प्रोड्यूस बॉडी। ठीक है, इसमें यूज कर सकते हैं हेबियस कॉर्पस को। उसके बाद सेकंड का डी है मैंडेमस, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, तो उन्हें कमांड कर सकते हैं। क्वो वारंटो अंडर व्हाट अथॉरिटी, पूछ सकता है कोर्ट कि किस अथॉरिटी से आपने ऐसा किया। एंड टर्शियरी इज वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस।
ये बन गया चार्ट। ओके। इसको यहीं पॉज करते हैं, मुझे थोड़ा टाइम दो। ओके, लेट्स कंटिन्यू। See question number 108. Members of legislative bodies enjoy the privilege of exemption from arrest or detention in prison. Members of legislative bodies enjoy the privilege of exemption from arrest or detention in prison. Its right option is option number first. That is only under civil process, and during the continuance of a joint sitting, meeting, a conference, or joint committee of the House of Parliament or House of a State of Legislature, or as the case may be, and during 40 days before and after such sitting, meeting, conference. So the right option is option number first. एंड मुझे भी नहीं आता है, मैंने पहले इन्फॉर्म किया ना, मैं भी सीख ही रहा हूँ साथ में आपके। इनकेस आपको आता है तो दैट्स वेल एंड गुड। सो कीप डूइंग, कीप गोइंग। See question number 109. The Comptroller and Auditor General of India, besides first supra, can also exercise powers in relation to the accounts of any other authority or body as may be prescribed by or under any law made by Parliament. So the right option is option number second कि वो अकाउंट्स के अलावा भी कोई दूसरी अथॉरिटी या बॉडी में काम कर सकता है अकाउंटिंग का, या फिर उससे रिलेटेड अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना देता है या फिर पार्लियामेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया था, किसी लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है तो। क्वेश्चन नंबर 110. आर्टिकल 14 डज नॉट इनकम्पास आर्टिकल इक्वालिटी, तो ये तो है, ये तो है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शन, ये भी इसी में फॉल करता है, ये नहीं पता था मुझे। क्या पता ना भी करता हो, बट द जो इसमें नहीं इनकम पास करता है वो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, जो कि है आर्टिकल 21 में। क्वेश्चन नंबर 111. राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन इन इंडिया, अवेलेबल ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया, आर अवेलेबल टू पर्सन ऑफ फॉरेन ओरिजिन। इसका राइट आंसर क्या होगा, पर्सन या सिटीजन? आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच ना, अवेलेबल टू ऑल पर्सन इन इंडिया। सिटीजन होगा या इन दोनों में से कोई है, बट किसके साथ जाऊँ, अवेलेबल टू ऑल पर्सन, ऑल सिटीजन? सेकंड के साथ जाऊँ क्या? सेकंड ट्राई करता हूँ, लॉक करता हूँ सेकंड। फर्स्ट या सेकंड में कोई होगा? ओह यस, सेकंड है। नाइस। इट टॉक अबाउट सिटीजन। ठीक है, तो मतलब फॉरनर्स अगर आते हैं, ऑल पर्सन में फॉरनर्स भी इंक्लूड हो जाएंगे, मतलब सबके लिए नहीं है, सिटीजन के लिए ही है। क्वेश्चन नंबर 112. A decision or finding given by a court or a decision or finding given by a court or a tribunal without jurisdiction can operate as res judicata under all circumstances, cannot operate as res judicata, cannot operate as res judicata under certain circumstances only, may operate as res judicata or may not operate। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज कैनॉट ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा। उस पर रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा अगर वो डिसीजन फेयर है तो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर फेयर नहीं है या फिर कोई और इशू है, तो जब सारे प्रोसीडिंग अगर कवर अप हो गई है उसके बाद आप जुरिडिक्शन को चैलेंज करते हो तो नहीं कर सकते ना, तो उस पर रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। So cannot operate as res judicata. Question number 113. The maximum pecuniary jurisdiction of the Court of Civil Judge in Delhi is of rupees 3 lakhs. A file suppliant in the court of a civil judge for recovery of rupees 3 lakhs together with the interest of 18% per annum from the date of institution of the suit till realization. Its right option is option number 3. The civil judge is empowered to try and decide the suit. Okay. क्वेश्चन नंबर 114. सूट फॉर पार्टीशन। देखो इसमें बाकी ऑप्शन क्यों नहीं रिपीट कर रहा हूँ कि मैं कन्फ्यूजन नहीं चाहता हूँ, जो क्वेश्चन है उसका डायरेक्ट आंसर रीड करो, उसको माइंड में फीड करो और फिर स्किप करो। जब हमें ऑप्शन दिया जाएगा तब हमें सेलेक्ट करना है ना, लेकिन इन केस अगर हमारे पास आंसर भी है, क्वेश्चन भी है और हमें
डायरेक्ट हम कर सकते हैं तो क्यों नहीं करें वो, ताकि अननेसेसरीली जो आउटसोर्सेज अनरिलेवेंट ऑप्शंस हैं तो उसको क्यों रीड करना। दिस इज द होल पॉइंट कि डायरेक्ट क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर सीधा माइंड में फीड कर लो। क्वेश्चन नंबर 114, a suit for partition of a property situated in different cities can be instituted where the defendant or any of them reside, can be instituted where the defendant or any of them resides. Option number 4. Question number अच्छा wait, a suit for partition of property situated in different cities can be instituted where the defendant रहता है जहाँ पर, या फिर एनी ऑफ देम, या कोई भी या तो प्लेंटिफ ही या डिफेंडेंट कहीं पे, नहीं प्लेंटिफ की जगह तो नहीं कर सकते हैं, या डिफेंडेंट ही होगा कि कोई और डिफेंडेंट रहता हो, कंफर्म करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से नॉलेज ले ली है मैंने कि कैन बी इंस्टीट्यूटेड विद द डिफेंडेंट और एनी ऑफ देम रिजाइड्स। क्वेश्चन नंबर 115, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है भाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टेम्परेरी इंजेक्शन में बी ग्रांटेड ओनली एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूट, टेम्परेरी इंजेक्शन में बी ग्रांटेड ओनली द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, इंस्टीट्यूट के बाद भी हो सकता है टेम्परेरी इंजेक्शन, किसी भी जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, फाइनल डिग्री नहीं आती थी, उसके बीच में कभी भी टेम्परेरी इंजंक्शन कोर्ट इशू कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 116, एज पर द सिविल प्रोसीजर कोड एज एप्लीकेबल टू दिल्ली, अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी फाइल only in the court within whose jurisdiction the property is situated. बाकी ऑप्शन क्या है, इधर द कोर्ट वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड और आल्सो इन द कोर्ट वेयर द डिफेंडेंट रेजिड्स। नहीं, ये तो डायरेक्ट है कि जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसी की जुरिडिक्शन में फॉल करेगा, क्योंकि वही तो उसको क्या कहते हैं, उसी की जुरिडिक्शन में, तो वही उसको दे पाएगा, दैट्स इट। मैं वही चीज़ इधर दे पाऊंगा ना जो मेरे घर में है, अगर कोई किसी को चाहिए तो मेरे घर में जो चीज़ है मैं वही दे पाऊंगा, मैं दूसरे के घर से कैसे दे दूंगा। तो एक कोर्ट की जो जुरिडिक्शन है, उसी जुरिडिक्शन में जो जो प्रॉपर्टी आती है तो उसी का टेक ओवर उसको उसी को दिलवा सकता है किसी दूसरी पार्टी को, दैट्स वाई। क्वेश्चन नंबर 117, एन एक्स पार्टे डिग्री कैन बी सेट असाइड using as mentioned under order 9 rule 13 of CPC, under order 9 rule 13 of CPC। ऑर्डर 930 रूल 13 ऑफ सीपीसी एक्स पार्टी डिग्री सेट असाइड की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 118, अ गार्निशी ऑर्डर इज एन prohibiting the judgment debtor prohibiting the judgment's debtor from making any payment to the judgment debtor। ये मुझे समझ में नहीं आया। prohibiting the judgment debtor from making any payment to the judgment debtor। अच्छा, समझ गया। गार्निशिंग ऑर्डर में ये होता है कि जो जजमेंट डेटर है उसका, अगर कोई डेटर है कि कोई दूसरा डेटर उसको पैसे देने वाला था, तो उस दूसरे डेटर को जो है वो रोक दिया जाता है कि पेमेंट ना करें। क्वेश्चन नंबर 119, a suit may be defeated due to non-joinder of a necessary party। नॉन ज्वाइंटर, मिस ज्वाइंटर तो हो गया कि चलो गलती से वो ज्वाइन हो गया, जो पार्टी जो पार्टी एक्चुअल में जिसकी रिक्वायरमेंट थी भी नहीं, ना ही बन रही थी। लेकिन नॉन ज्वाइंटर वो है जिसका एक्चुअल में होना था और जो नहीं जुड़ता है, तो उनको कहते हैं नॉन ज्वाइंटर, जिसका पार्टी में होना रिक्वायर था। सो नॉन ज्वाइंटर ऑफ नेसेसरी पार्टी। Question number 120, an arbitration agreement prohibiting for arbitration of four arbitrators is under the Arbitration and Conciliation Act 1996 to be construed as an agreement for arbitration by sole arbitrator by sole arbitrator। Let's give me some time to read this question one more time। An arbitration agreement providing for arbitration of four arbitrators is under the Arbitration and Conciliation Act 1996 to be construed as an agreement for arbitration by sole arbitrator। Question number 121, the arbitration awards rendered in arbitration proceedings commence before the coming into force of the Arbitration and Conciliation Act 1996। Its right option is option number 3, are to be challenged as per the provision of Arbitration Act 1940 only
unless otherwise agreed by the parties, are to be challenged as per the provision of Arbitration Act 1940 only unless otherwise parties otherwise agreed by the parties. Question number 122. An arbitration award under the Arbitration and Conciliation Act 1996. Question number 122. An arbitration award under the Arbitration and Conciliation Act 1996. Option number three has the status of a decree only after the time of 3 months for making an application to set aside the same has expired or such application having been made has been refused. ठीक है कि आर्बिट्रेशन अवार्ड तभी फाइनल होगा जब उसको इशू हुए 3 महीने हो जाएंगे और उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा, या फिर जो अगर चैलेंज किया गया है तो उसको सेट असाइड कर दिया जाएगा, तब जाके जो है वो आर्बिट्रेशन अवार्ड फाइनल हो जाएगा. Question number 123. An application under Section 11 of Arbitration and Conciliation Act 1996 can be filed. An application under Section 11 of Arbitration and Conciliation Act 1996 can be filed. Can be filed either in the Supreme Court or in the High Court. ठीक है. Question number 124. A civil court before which an action is brought in a matter which is subject matter of arbitration, while referring the parties to arbitration on application of any parties under the Arbitration and Conciliation Act 1996, required to dispose of the suit in terms of said reference. Dispose of the suit in terms of said reference. A civil court before which an action is brought in a matter which is subject matter of arbitration, while referring the parties to arbitration on application of any parties under the Arbitration and Conciliation Act 1996, required to dispose of the suit in terms of said reference. Terms of said reference. Hmm. क्वेश्चन नंबर 125 का राइट आंसर है in an arbitration between two parties before an arbitrator appointed by the Chief Justice of the High Court in exercise of power under Section 11 of the Arbitration and Conciliation Act 1996, the rival parties filed claim against each other when the arbitration was at an advanced stage. The parties are of the opinion that the arbitrator is likely to reject the claim or counterclaim of both the parties. The parties jointly inform the arbitrator that they are not willing for arbitration before him and stop appearing before him. The parties thereafter are entitled to appoint another arbitrator and to start arbitration proceeding de novo. Okay, so the right answer is option number first. आई एम फीलिंग टायर्ड, आई डोंट नो. अभी तो 25 क्वेश्चन किए हैं, इससे पहले मैंने 50 किए हैं, 50 करके उसको अपलोड भी कर दिया, और अभी फिर 50 मैंने सोचा कि करूं, लेकिन 25 होते ही, क्योंकि आई डोंट नो ये लेंथी है, 7 पेज मैंने कर दिए हैं इसमें, इस वाले में, और अभी से थोड़ा सा लो लग रहा है. हालांकि मैंने और भी वीडियोस जो हैं जजमेंट वाले वो अपलोड किए हैं, तो मे बी दैट्स वाई. लेकिन एटलीस्ट 100 क्वेश्चन अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो चिंता का विषय है भाई. 75 कर पा रहा हूँ, 75 हो गए हैं बेसिकली. क्वेश्चन नंबर 126. A has lent monies to B under a written agreement containing an arbitration clause. The agreement does not specify the time of repayment. Important point है. Rather, the money was repayable on demand by A after 5 years of the date when the loan was made. और ये भी नहीं मेंशन था कि repayable on demand by A, कि A जब बोलेगा तब देना पड़ेगा.
अच्छा अच्छा, ये मेंशन था कि अगर ये बोलेगा तब देना पड़ेगा। ए आफ्टर 5 years ऑफ द डेट व्हेन द लोन वाज मेड डिमांडेड मनी which was not repaid by B, the parties could not arrive at a consensus on the appointment of arbitrator. Also, a filed an application under section 11 of the Arbitration and Conciliation Act 1996 before the Chief Justice of the High Court for appointment of an arbitrator. B, in response to the said application, contends that the claim of A is stale and barred by time, and thus arbitrator is not appointed. The chief justice is bound to dismiss the application for appointment of arbitrator, since the claim adjudication whereof is sought by arbitration is barred by time से barred हो गया. So the right option was option number second. See question number 127. A private limited company have registered office at Delhi, advances money to another private limited company also at Delhi. Disputes and differences arising relating to the said transaction, and the parties agreed to the arbitration at Mumbai by a retired judge of the Bombay High Court, who both trust. The arbitrator delivers an award at Mumbai. The private limited company, which had advanced monies during the pendency of the arbitration proceedings, also shifts its registered office at Mumbai. The award dismisses the claim of the said private limited company. The challenge to the said award can be made only in the courts at Delhi. Let me read this question one more time. A private limited company having registered office at Delhi advances money to another private limited company also at Delhi. Disputes and differences arises relating to the said transaction, and the parties agree to the arbitration at Mumbai by a retired judge of the Bombay High Court, who both trust. The arbitrator deliver an award at Mumbai. The private limited company, which had advanced money during the pendency of the arbitration proceeding, also shift its registered office at Mumbai. The award dismisses the claim of the said private limited company. The challenge to the said award can be made only in the courts at Delhi. Okay, so its right option is option number second, that is only in the courts at Delhi. Question number 138. A files a petition for eviction under Delhi Rent Control Act 1958 against B before the court of the additional rent controller. C thereafter files a suit in the court of the civil judge for declaration it is in fact that it is in fact he, that is C, who is tenant in the premises under, and alleging that A has intentionally instituted the petition against B, who is in conclusion with A to obtain an eviction order and to in execution thereof in fact evict C from the premises. C, along with the said suit, also files an application for interim injunction to restrain A from proceeding further with the eviction petition in the court of the additional rent controller. It will take time to me to understand this question. A files a petition for eviction under the Delhi Rent Control Act 1958 against B before the court of the additional rent controller. C thereafter files a suit in the court of the civil judge for declaration that it is in fact he, that is a C, who is tenant in the premises under, and alleging that A has intentionally instituted the petition against B, who is in collusion with A to obtain an eviction order and to in execution thereof in fact evict C from the premises. C, along with the said suit, also files an application for interim injunction to restrain A from proceeding further with the eviction petition in the court of additional rent color uh, in the court of the additional rent controller. हाँ, दैट्स वेरी नाइस क्वेश्चन. इसमें ये कह रहे हैं कि ए जो है बी को एविक्ट करने के लिए दिल्ली रेंट कंट्रोल का एक्ट का यूज़ करते हुए उसको एविक्शन के लिए एक ऑर्डर चाहता है. कहाँ पे? कोर्ट ऑफ एडिशनल रेंट कंट्रोलर के पास, वहाँ पे. लेकिन फिर सी बाद में रोल में आता है और सी कहता है कि वो तो मेरा है और ये दोनों मिल के मुझे जो है वो निकालना चाह रहे हैं. तो उनका जो है ए को रोका जाए कि वो उस कोर्ट में भी ना जाए, और इसके अलावा जो है ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि वो जो है वो पोजीशन जो है वो पोजीशन का हकदार जो है वो सी है. सो हेयर सी इज नॉट इंटाइटल टू सच इंटरिम इंजंक्शन. यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज नॉट इंटाइटल टू सच इंटरिम इंजंक्शन.
उसी उसी केस में आई थिंक उसमें पार्टी बना दिया, उसी केस में उसको पार्टी बना दिया जाएगा। सेंस तो वही बनाएगा वैसे। क्वेश्चन नंबर 129 ए। इसमें इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, अभी तो 8 ही पेज हुआ है। 9 10 11, 5 पेज और बचे रीड करने के लिए। और इसके क्वेश्चन इतने लंबे लंबे हैं, लेंथी लेंथी। चलो कुछ और है उसके बाद छोटे हैं। हम्म। चलो थोड़ा और। Question number 129A. A renowned architect agreed to design a palatial residence for B in order to secure undivided attention of A also incorporates a term in the contract that A shall, during the period of 3 years, which was the time stipulated for completion of the work, shall not take up any other assignment and shall thereafter also not design a similar residence for any other client. A, in spite of receiving full payment in advance, refuses to even give any designs to B, and for the reason there whereof the work could not commence. B sues A for a specific performance and in alternative recovery of advance and damages, and also for injunction restraining A from taking up any other assignments for a period of 3 years. Its right option is option number 4, that is B is entitled to refund of advance and damages for breach of contract and also to the relief of permanent injunction. B is entitled to refund of advance and damages for breach of contract and also to the relief of permanent injunction. B is entitled to refund of advance and damages for breach of contract and also to the relief of permanent injunction. Okay. Question number 130. A citizen institutes a suit for injunction restraining several radio channels from playing music without permission of and paying royalty, etc. to the persons holding intellectual property rights in the said music, alleging some actions of the radio companies to be in violation of laws. It is specified in the plaint itself that the plaintiff himself does not hold any copyright and is not personally interested in the matter but has filed the suit merely for enforcing the laws which the authorities had failed to enforce. Its right option is option number first, that is, the plaintiff in such a suit is liable to be rejected at the threshold as barred by law. Question number 131. Specific performance of any contract may be ordered where specific performance of contract of any contract may be ordered where there exists no standard for ascertaining actual damage by non-performance of the act to be done. Specific performance of any contract may be ordered where there exists no standard for ascertaining actual damage by non-performance of the act to be done. Okay. कि आपको वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना ही पड़ेगा क्योंकि उसकी जो वो जो वर्क है उसकी कोई वैल्यूएशन ना निकल रही हो या फिर उसका कोई डैमेजेस का जो है वो कोई आइडिया ना हो। अगर वो काम ना हो तो उसका क्या, अगर वो काम ना हो तो उसके क्या डैमेजेस होंगे, उसका कुछ आइडिया ना मिल पा रहा हो, तो ऐसे में जो है सामने वाले व्यक्ति को इन्फोर्स किया जा सकता है कि आप वो टास्क ही कंप्लीट करके दो। क्वेश्चन नंबर 132। A time barred debt can be claimed as a set off, as a counterclaim, as a fresh suit, none of the above. Question number 133. Acknowledgement after the period of limitation is of no effect. Give rise to an independent enforceable contract. Acknowledgement after the period of limitation. Acknowledgement after the period of limitation is of no effect. Right option is first. Okay. Question number 134. What does the legal maxim sui generis means? Sui generis means. What does the legal maxim sui generis means? The right option is second, the only one of its kind. The only one of its kind. Sui generis. The only one of its kind. Question number 135. A suit for damages for breach of contract can be filed at a place. A suit for damages for breach of contract can be filed at a place where the contract was executed, where the contract was to be performed. So the right answer is both, first and second. Question number 136.
In a suit for maintenance, arrears can be claimed for the last 3 years. Right option is option number four. Question number 137. Upon the coming into force of the Limited Liability Partnership Act 2008, both the acts coexist, but the provisions of Indian Partnership Act 1932 are not applicable to LLPs save as otherwise provided. Question: Upon the coming into force of a Limited Liability Partnership Act, both the acts coexist, but the provision of the Indian Partnership Act 1932 are not applicable to LLPs or save as otherwise provided. Okay, so Indian Partnership Act भी applicable होगा और coexist एक एक दूसरे के साथ चलेगा, बट इसका प्रोविजन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजन 1932 वाला आर नॉट एप्लीकेबल टू द। अच्छा, इंडियन पार्टनरशिप का एक्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा एलएलपी वाले एलएलपी के वाले पोर्शन में। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होता है ये, तो उस वाली चीज़ में अगर वो रजिस्टर्ड है थ्रू लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, तो उसमें इसका जो रूल है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। व्हाट विल बी द सुटेबल वर्ड फॉर दैट कि वो एप्लीकेबल नहीं होगा। पर दोनों ही रहेंगे। ओके, सी क्वेश्चन नंबर 138। A, B, and C are partners in a firm. C retires and X is admitted as a new partner. The firm did not give a public notice of the change but continued its business in its old firm name. Z, a customer of the firm, deals with the firm after the change and the firm becomes indebted to him. Its right option is option number three. Z can sue either A, B, and C or A, B, and X. Z can sue either A, B, and C or A, B, and X. Question number 139. A partnership firm is a distinct legal entity from its partner. नहीं. An independent juristic person. नहीं. An agent of its partner. Right option is option number four. That is none of the above. Question number 140. Communication of acceptance is complete as against the proposer when it is put in the course of transmission to him so as to be out of power of the acceptor. Question number 141. If only a part of the consideration or object is unlawful, the contract under section 24 of the Indian Contract Act 1872 shall be where is void। ये दोनों तो नहीं है, इसके ऑप्शंस तो मिसिंग है। void as a whole, फोर्थ ऑप्शन है valid as a whole। its right option is option number 3, that is void as a whole। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है void as a whole। क्वेश्चन फिर से रीड कर लेते हैं। इफ ओनली अ पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, द कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 24 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शैल बी void as a whole। Question number 142. Two parties entered into a contract. They later realized that
there was a mistake in their understanding of the law as applicable in India. This makes their contract, this makes their contract, or this makes their contract known as voidable. None of this. Question number 143. A contract caused by mistake of law not in force in India has the same effect as though it was caused by a mistake of fact. Question number 144. An agreement is a restraint of trade is an agreement in restraint of trade is an agreement in restraint of trade is void to the extent of such a restraint. Void to the extent of such restraint. Question number 145. Which of the following is an offer? A bid at an auction sale. A bid at an auction sale. Question number 146. If a future event on which a contract is contingent is the way in which a person will act at an unspecified time, the event shall be considered to become impossible. Its right option is option number third, that is both first and second and above, so we have to read first and second. When such person does anything which renders it impossible that he should so act within any definite time, and second is otherwise than under further contingencies. So the right option is option number 3, that is both first and second above. Question number 147. In which of the following cases a contingent contract becomes void? Its right answer is first, that is if the contract contemplates the happening of the event within a certain time and event does not happen or its happening becomes impossible. So the right answer is first. Question number 148. An unregistered partnership firm has claim arising from a contract against several persons. After obtaining registration of the firm with the registration with the with the registrar of firms on the last date of limitation for filing the suit, the suit is filed on the same date. The defendants take a plea that the plaintiff firm was not registered neither at the time of the agreement nor at the time when alleged cause of action accrued, and the registration on the last date of limitation is of no avail, and the suit is hence bad. Whether the said defense has any merit? No. Question number 149. A inducts B as a tenant in the property. B pays rent to A for 3 months when A suddenly dies. Owing to inter se disputes between the legal heirs of A, neither any rent is paid by B for over 12 years, nor does any legal heir of A otherwise deals with B with respect to the said property. After nearly 15 years, when the dispute between the legal heirs of A are resolved, the legal heir who is so held entitled to the property demands arrear of the rent from B as well as determine the tenancy of B and demands possession from B. B refuses contending that he has become owner of the property by adverse possession since he was not treated as a tenant for nearly 15 years. Is there any merit in the said defense of B? The answer gonna be no. See, last question. Question number 150. Under the law in India, a joint promisee समझ में आया ना? वो कह रहा है कि अगर उसमें डिफेंस ये दिया था कि 15 साल तक तो आपने रेंट माना नहीं और एडवर्स पोजेशन के थ्रू ये प्रॉपर्टी जो है ये हमारी हो जाएगी, इसको उसने डिफेंस रखा, तो क्या वो डिफेंस वैलिड है? द आंसर इज नो. Question number 150. Under the law in India, a joint promisee, as distinct from a joint and a several promisee, is liable alone to discharge the joint promisee. The answer is true. Under the law in India, a joint promisee, as distinct from a joint and several promisee, is liable alone to discharge the joint promisee. True. So this was the next 50 question that we started from question number 101 to and ended on question number 150, and the remaining 50 question, the exam carries
almost 200 questions. So we have already solved up till question number 150, and we will the remaining 50 question we will solve in our next video. Till then, have a good time. Bye bye. See you. थक गया, 40 मिनट हो गए इसको। जो इससे पहले वाले 50 क्वेश्चंस किए थे वो 15 मिनट में हो गए थे, और इसी को करने में मुझे 40 मिनट लग गए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कंपैरेटिवली लेंथी थे। बट डजेंट मैटर, क्या करें, करना तो है ही। सो कीप डूइंग, कीप प्रैक्टिसिंग। अप टिल देन, हैव अ गुड टाइम। बाय बाय, थैंक यू।